Good evening to one and all present over here. My name is Jasleen Nandra and I'm a member of Global Youth School. So firstly, I would like to give a short intro about PCC, Punjabi Chamber of Commerce. Punjabi Chamber of Commerce is a non-profit organization dedicated to Punjabi professional businesses. Established in 2017, we have become truly global with 17 chapters in 5 countries across four continents. Our endeavor has been to facilitate a network forum with a focus on capital building and capacity building. The objective is to create a legacy for the next generation to grow, build, and succeed. We have a strict no religion, no politics policy in place. We believe in diversity and inclusion. Signing for PCC is super easy and free. Our charitable arm, Punjabi Chamber Foundation, raised 1 lakh recently and distributed 100 oxygen concentrators in government hospitals in Punjab. We are now raising funds to set up 2 oxygen plants, one each in Manali and Jalandhar. We have partnered with Rotary International for the same. We have a global youth squad wing as known as Global Youth Squad. So let me give you a small intro about Global Youth Squad. Global Youth Squad is the youth wing of the Punjabi Chamber of Commerce. It has a clear vision of making remarkable history by empowering the future custodians, the young. It is led and managed by enthusiastic and highly spirited youngsters. We train them by providing opportunities for networking, membership, internship, and professional training sessions. My group leaders are Romandeep Kaur, Amandeep Kaur, me as Jasleen Andhra, Jaspreet Singh, Khushbu, and Priyanka Sharma. As you all know, we had very successful webinars earlier, which can be described in few words. First would be Ikagai, giving a sense about career options we have and making you realize about the future opportunities. Second, peer pressure, a very successful webinar with lots of fun activities and animations must have made you realize about the adverse effects of peer pressure and how to overcome them in your daily life. Now, I would like to give a warm welcome to one and only Dr. Kumar. She doesn't need any introduction. Just a few words I would like to say in her honor. To be honest, Dr. Rajshri Datta ma'am is one of the most humble and grounded person I've met till the day. I guess I would lack words while describing her. Dr. Rajshri ma'am is an expert on women's justice and law with doctorate from IIT Delhi, India, and has more than 14 years of experience. She enjoys experimenting with food and she also loves to read and sing. More about to say about her. Over to you, ma'am. Yes, thank you so much for this wonderful introduction about PCC and also a wonderful few beautiful words for me, Jasleen. Thank you so much. It just makes the day very special. And I welcome all of you once again, along with the GYS team. It is indeed an honor and privilege for all of us to hear Mr. Sushant Kalra today on building resilience. And we are also honored to have Dr. Pooja Sukhija, who is the mentor Global Youth Squad of PCC. And before introducing or formally welcoming our guests today, I would also like to share a bit of what we have been doing in the past 2 weeks, because we had interviewed and we had also had a wonderful series of meetings with the young leaders of Global Youth Squad, and they collectively identified and they echoed that there was a need for them to have some kind of workshop training or some guidance around mental awareness and mental health, because that's something that they needed the most, apart from their, I mean, before they could talk about the career choices that they would have to make and other things. So this series was conceptualized in
in 4 phases or in 4 workshops. The first one that we did was on Ikigai. It was like more on around finding one's core, and it was done by one of our very young and young leaders of Punjabi Chamber of Commerce, Mr. Govindip Singh. The second was on peer pressure. This was done by Dr. Sukija, students from Indian Business School, Hyderabad. Wonderful team. They did a wonderful job on creating very experiential learning atmosphere around peer pressure. And today we are on the third workshop, which is on building resilience. And we thank Mr. Sushant Kalra for giving us his time. And thank you so much. Before I introduce him, I would also like to talk a little bit about my understanding of resilience, because all this while we have been understanding, I mean, in the professional adult world, resilience, we talk about buildings because the technologies are there. So the building has to be resilient enough to save itself from falling off and all that. But today I was like trying to understand, and I discussed within the team members also in the team that how do I define them. They were like, fine, when you try you fail, when you try again you fail, and then you try and then you succeed, and that's the resilience part of it. So like a lot of setbacks that we face, and eventually we find our way to the directed goal that we have defined, or the objective that we have in our mind. The last workshop series also I had talked about, when we talked about peer pressure, I talked about some 5 C's. Today I have 7 C's right in front of me that I thought we could just discuss around resilience. We need competence, we need confidence, we need character, we need control, we need contribution, we need connection, we need hoping, and these are the 7 C's that we could think about building the resilience. And I'm sure Mr. Kalra would be a better person to talk about many more things apart from all these pointers that I have just taken down from various sources. And we should also look at the resilience concept, in the context of 5 pillars as to how aware we are about ourselves. What kind of mindfulness do we need? How do we do the self-care? How do we care about ourselves? What kind of positive relationships that we have, and how are we able to build the positive relationships, which we have also understood in our previous 2 sessions that we have had. And there has to have a purpose. That's where the falling, the rising becomes much more easier for us, because we have a purpose. We know that is defined, and we have to reach to that purpose. Now, if I have to just quote Maya Angelou, as you all know, she was a renowned poet from the African continent, and a activist also. She, in her words, I'll say, "Still I rise. You may trade me in the very dirt. You may trade me in the very dirt, but still, like dust, I will rise. Still I rise. Still I rise." With this, I welcome Dr. Sukhija uh, to join us today for this wonderful workshop that we are going to have. And about Dr. Sukhija, can I have the slide for Dr. Sukhija, please? Can I have the slide for Dr. Sukhija, please? Yes, yes. So Dr. Sukhija, as you can all see in the slide, that she is an academic advisor and an educationist who is a very passionate one, to be honest, an influencer and a mentor to the youth. And her mantra remains, I can and I will make a difference. I believe that it is like, it can be little extended. It's not that I can and I will make a difference. She also facilitates. She facilitates the youth to make a difference. So that's what Dr. Sukhija does when she does talk about, with her efforts, she tries to bridge the gap that we have in the academia as well as the industry. Academia does train the youth into something. The industry needs some other sort of some other professionals or some other trained workforce, the knowledge force. So that's where Dr. Sukhija does the bridging between academia and industry through the soft skills training that she does and the placement of the youth that she's quite passionate about. She's armed with 2 doctorates and a gold medalist. And she also adds a lot of value to the corporate education. She's founding director of the NGO OSS. And with her, I would also like to welcome
Mr. Sushant Kalra. Mr. Sushant Kalra has 29 years of experience in diversified segments. I can just read it in the slide: manufacturing, venture capital, banking, insurance, education, training, what not. And he has trained almost 8,000 employees in change management, process optimization, leadership, and management. And he has also trained 25,000 parents and teachers across the globe as an author of Perfect Parenting and How to Raise Happy and Successful Children. I think this is perhaps the most apt platform that we are fortunate to hear him today, and his design, his sort of concept that he has implemented, that he has designed on no limit curriculum at the Pragyanam School, Gurugram, would definitely, I'm sure he would, his talk would reflect something around that as well. And as a TEDx speaker, he has also created and developed the Parvarish Child Development Model. And he has also won Education Innovator Award at the 5th Ed Leadership International Conference. And he has been conferred with the Courageous Class Award by the Kenneth Cole Foundation US. I welcome you, sir. But before I request you to sort of open the session, I would also request Dr. Sukhija to kindly have few words uh, in this regard or in this context. Thank you so much. Dr. Sukhija, we have lost her. Has she lost her network? Okay. So I think I can quickly request Mr. Kalra to join us, and the session, the floor is all open for you. We welcome you, sir. Thank you. Sure, thanks, Rashi ma'am, thanks Priyanka, thanks everyone and thanks to PCC for making this happen today. Really great. A small request, we're just about a very small number of people here. Can I request everybody to just switch on their videos? Will that work for you? It's a small group. It's very difficult to talk to blank screens. Yeah? So if you can all, because I'll tell you what, this is not going to be a talk. We're going to interact. So I would request you to switch on your videos and unmute yourself. So whatever age you are, hi Sudhir, hi everybody. So my request is if you can all unmute yourself. Agar piche background mein, if there is a noise, then sure, monitor it. But my request would be we'll participate through the program. So I think how normally your talks are designed, that I'll be talking for some time and then we'll have Q&A. This will be different. I'm going to take you through a process today. So there's no point talking about failure and saying failure is great. We all hate it from the bottom of our hearts. Let's not fool ourselves. So so everybody else, yeah, is there any problem in your bandwidth that we are not able to switch on the videos? Or because I'll tell you what, the value of this session is going to be in participation of it. If you don't think कि मैं पीछे सुनता रहूँगा और कुछ और करता रहूँगा, it's a waste of time for you and me. So great, thanks. And by the way, you want me to talk in English, Hindi, Punjabi थोड़ी मुश्किल हो जाएगी. So I am a Punjabi, but not as conversant with Hindi and English. बोल लांगा, सुन भी लांगा, समझ भी लांगा. So what do you want? Hindi, English, guys? Tell me what works for you guys. कोई भी सर सब में comfortable. And you have to. Yes. सब में comfortable हो. बंगाली जी गल करा. है जगतार. कर लो सर. बांग्ला बोलो. कोई चक्कर नहीं, सुनना तो मैं तो सुनना ही नहीं है, तो जो मर्जी बोल ले. नहीं. Okay, great. So let's. चल सुनना नहीं है, काम करेंगे. So how do we want to start this session? Is I really want you to pick up a real failure for yourself, an area of life which you are dealing with. Okay, तभी मजा आएगा जब इस सेशन से कुछ लेके जाएंगे. ऐसे सिर्फ कहानियां सुन के कोई फायदा नहीं है. So let's pick up a real failure, and I request everybody. So Rashi ma'am, everybody who's even a host, anybody who's joining this session, just pick up a real failure. And failure can be big, small, any area of your life. Could be relationships, could be work, could be money, could be studies, could be college, could be anything. Just pick up a failure for you, and if somebody wants to just share it out for a minute, it will be great. Else it's perfectly fine not to share it. Your choice. But I want everybody to just say yes if you've already done that. Like really pick up a live failure for yourself. I'm waiting for everybody to say yes before I move on. Okay.
Yes. Great. Got everybody. Okay. So take a minute and recall this. Okay. Bring that failure into your mind. I know it won't be comfortable, but I can promise you one thing: by the end of this session, you will have a breakthrough. No questions asked. In the area which you've been struggling, it could be struggling for years maybe. कोई रास्ता नहीं दिख रहा होगा, आज आधे घंटे में दिख जाएगा. So just take a minute, close your eyes, and bring that experience of that failure into your mind right now. कि क्या कर रहे थे, क्या हुआ, कैसे हुआ? How were you feeling about it? What were your body sensations? What were you saying to yourself? What were you saying to others? What were you saying about that thing? What were you saying about the society, about the environment around it? So just take a minute and really get present to it in reality. And I'm sure each one of us has failures. ऐसा शायद कोई नहीं होगा, कोई इंसान ही नहीं होगा जो फेल नहीं हुआ होगा. हम तो भगवानों में भी फेलियर ढूंढ लेते हैं. So everybody done? So a few questions, okay? And I want you to just unmute yourself and talk about it. How are you? So while that is happening, you may or may not share the failure. It's perfectly fine. But I want you to ask you is, what were the feelings which you were having while in the moment of the failure? Right in the moment of the failure, what was your body sensation? Body में क्या हो रहा था? मतलब heartbeat तेज हो रही थी, सर दर्द हो रहा था, anxiety हो रहा था, क्या हो रहा था? Okay. And keep shouting, everybody. Just shivering, just anxiety. Feeling like useless. Feeling like useless. Yeah. Anybody else? Sorry. जिसकी आवाज थोड़ी नहीं आ रही है, आप जो बोल रहे थे, it's not too clear. Anybody? Feeling like betrayed or feeling betrayed. Okay, perfect. Feeling betrayed. Anything else? Keep Shivering going. in the Just shout out. Shivering in the body. मैं एक काम करता हूँ. I can help you with something. I can share a quick feeling chart. इसको देख के क्या क्या दिख रहा था? मैं शेयर कर देता हूँ आप लोगों से. आपको दिख रहा है एक फीलिंग सा चार्ट आ रहा है आपके सामने. You can just quickly see कौन कौन सी फीलिंग होती है. मैंने थोड़ी सी ब्लॉक कर दी है, बहुत सारी ब्लॉक हो गई होंगी, but not a problem. Whatever you can see. इसमें से कुछ समझ पा रहे हो? Just shout out whatever rings a bell. Just shout it out. क्या feeling आ रही है? Guilty. Sad. Okay. Guilty. Got it. Sad. Bad. Embarrassed. Scared. How many of you were scared? Mad. Okay. Angry. How many of you were angry? Angry, disgusted, and frustrated. कितनों को ये feel हो रहा था? सभी को हो रहा होगा. Exactly. सभी मत बोलो. Disgusted, So my request is don't go. सभी को go to yourself. Okay. This is very experiential. Stay with yourself. Don't generalize it. Disgusted and sad. Disgusted, sad. Yes. Great. Ojasvi, Sami, Aarti, confused. Great. So even if just keep noting it down for yourself that it was pretty. And how was the body sensation? क्या vibrations हो रही थी, गुस्सा चढ़ रहा था, numb हो गए थे, mind block हो गया था, क्या हो गया था? या बहुत तेज चलने लगा था, चिल्लाने का मन कर रहा था, रोने का मन कर रहा था, क्या कर रहा था? रोने का मन कर रहा था. और अपने आप को क्या बोल रहे थे जब आप नहीं कर पाते थे? तो when thing is not happening, what do you say to yourself? मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता. या फिर ये बोल रहे हैं यार ये जगह ही खराब है, वो लोगों की गलती है, उसने मुझे हेल्प नहीं किया, इसने नहीं किया. What were you talking about? और नहीं हो पाएगा. और अब लगता है कि आगे और कोई रास्ता नहीं था, बस एक ही आखिरी रास्ता था, इसके आगे अब कुछ नहीं करा जा सकता. Okay. How many of you said कि यार ये तो this is not my cup of tea यार, ये तो मतलब करना ही नहीं चाहिए था, ये तो मेरे बस का ही नहीं है, छोड़ परे, कुछ और करता है, छोड़. How many of you have actually given it up? Making excuses, right? मम्मी ने हेल्प नहीं किया, पापा ने हेल्प नहीं किया, दोस्त ने छुरा भोग दिया. You always try to get a run around. कोई ना कोई तरीका निकाल के, right? That whole space is. So if I ask you one question, okay, one quick question, and just say one word. If I say failure is dash, what would you say it is? एक word में बता. Failure is dash. And really feeling से, not कि यार failure is a stepping stone to success. अरे वाह यार, बहुत बढ़िया. लेकिन फिर failure होने में रोते क्यों यार? If it's a stepping stone. So failure is dash. Motivation for me. खुशबू? Yes, it is. खुशबू?
एक सेकंड, अभी फीलिंग में जितनी आपने बताई थी उसमें से एक भी मोटिवेटिंग नहीं. So let's not fool ourselves. Okay. एक सेकंड, खुशबू, do you want to fail? Unmute yourself and say, do you want to fail? No, I don't want to, but I do sometimes. So एक सेकंड, hang on. Okay. एक साइड पे बोल रही हो मोटिवेटिंग है, एक साइड से बोल रही हो कि I don't want to fail. मेरे को लॉजिक नहीं समझ में आ रहा. Don't. My request is, guys, do not philosophize it. This is not philosophy. I'm not doing something to say, अच्छा ऐसे मत सोचा करो, ये सोचा करो, वो सोचा करो. जब फेलियर होता है ना, सामने वाले का मुंह तोड़ने का मन करता है. हाँ या ना? और मन करता है अपने रूम में चले जाओ, बंद करके रोते रहो, मेरे को खाना नहीं खाना, कुछ नहीं खाना. Yes, no, कुछ दो. When was the last time when you actually failed and, oh, मैं motivated हो गई हूँ और चलो पार्टी करते हैं? करा था? So don't fool yourself. I'm seriously saying, gosh, this is real stuff. Reality में आ जाओ. What is failure? Failure is dash. So really say out what you really mean by failure. जब fail होते हो ना तो word क्या आता है? वो word बताना. अगले दिन सुबह उठ के नहीं. हाँ, sorry. डर. Failure is fear. Okay. Failure is Foolishness. failure is Foolishness. failure is foolishness. Okay. So failure is jealousy. Failure is jealousy. Great. Failure is frustrating. Okay. Everybody, just keep shouting out. It's a learning also. It's a learning. हाँ, मतलब यार सीख तो मिलती है. जब हमें वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए होता है तो हम कहते हैं सीख तो मिल ही गई है. But Sudhir, let's. So if you want to, do you want to learn? So why not you want to fail? Agar failure is learning, then why don't you want to fail? You did a foolishness and this was a learning which you have to not do it next in your life. You know, this is an afterthought. अरे यार कुछ नहीं हुआ, चल सीख तो गया, एक और तरीका. Yes. I'm talking about the feeling when you fail. That was a foolishness. Yeah. So whatever you say, okay. So I want to introduce you something very, very new today, okay. And so what we at Parvarish say, okay. What we say when we fail. Wow, I failed. By the way, here it is. This is my office. That's a poster in the office. 10 years. Wow, I failed. And really enjoying it. Could you see the joy on her face? How many of you want to take this journey? From failure is frustrating, failure is foolish, failure is free, fear, failure is irritating, failure is frustrating, failure is depressing, to wow, I failed. Ready for this journey? थोड़ी जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत कम है आज. By the way, total time कितना है मेरे पास? Jasleen, how much time do I have in total? Let me know because I'll pace it accordingly. You have 45 minutes. 45 minutes. Okay. So including my question answers, I don't need question answers after that. Okay. Yeah. Perfect. So ready for this journey? Yes, sir. And we'll start the journey when you guys were this small. इतने छोटे तो कभी भी नहीं थे. जब पैदा हुए थे, 1-2 साल के थे, 1 साल के थे, वहां से जर्नी शुरू करेंगे, ठीक है? So just imagine that who you were with this small dot. Imagine you were this small dot. That was 1 year. What happened when you all took your first step? जब पहली बार पहला स्टेप लिया था तो क्या हुआ था? गिरे थे ना? गिरे थे. और गिर के बोला था आज के बाद तो मैं दोबारा चलूंगा ही नहीं, ठीक है? What did you do next? दोबारा उठे. तुम्हारे मम्मी पापा ने डांट के बिठा दिया, दोबारा चलेगा ना टांगे तोड़ दूंगी. तुम गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर एक दिन क्या आया? चलने लगे, right? Absolutely. What happened when you picked up a pen or a pencil for the first time and said कि आज मैं कुछ लिखने की ट्राई करता हूँ? आपने किसी बड़े भाई मम्मा पापा को लिखते हुए देखा तो मैं भी लिखूंगा. पहली बार जब लिखा आया तो पेंसिल भी उठाई गई. हम ना ऐसे करके पेंसिल उठाते थे, ऐसे करके, जैसे ना कोई मतलब हथौड़ा उठाया हुआ, राइट? वी यूज्ड टू कॉल इट अ हैमर ग्रिप. ऐसे पकड़ना ही नहीं आता था. और कितना टाइम लगा था. एक मम्मी ने पीट के टीचर ने पीट के ए लिखाना सिखाया था. वो भी 2 लाइनों में ही लिखा जाता था, पूरा ऊपर बाहर. और फिर टीचर कहती 10 बार लिखो. और फिर हाथ दर्द करता, मम्मी और नहीं हो रहा, राइट? हाथ पकड़ के सिखाया, सब कुछ सिखाया, लेकिन हम नहीं लिख पाए. फाइनली लिखना आ गया, राइट? Yes, sir. इतनी मुश्किल होती थी लाइनों में, अब सोचते भी नहीं है, अपने आप हाथ चलता है. स्पेलिंग भी नहीं याद करना पड़ता है. It took at least 2-3 years of failing, getting up, and finally you all learned how to write. How many of you know how to bicycle, by the way?
कितनों को बाइसिकलिंग आती है? मेरे को अच्छा उल्टा करता हूँ, कितनों को नहीं आती? चलो उल्टा करते हैं. एनीबडी हियर हु डजंट नो बाइसिकलिंग? दिस अनम्यूट योरसेल्फ, नॉट प्रॉब्लम. बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे, मेरी ऑफिस में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको साइकिलिंग नहीं आती. एनीबडी हियर हु डजंट नो साइकिलिंग? नो वन? ओके ग्रेट. सो जब पहली बार साइकिल पे बैठे थे तब क्या हुआ था? गिरे थे, डर लगा था। और बड़ी जोर से गिरे थे यार, चोटें भी लगी थी, खून भी निकला था, कहीं उनकी हड्डियां भी टूट गई थी बाय द वे, राइट? उसके बाद क्या हुआ? फिर उठे, फिर चले, फिर उठे, फिर मम्मी ने किसी ने पीछे से पकड़ा, फिर किया, किसी ने कुछ किया, और फाइनली 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 1.5 महीने के बाद साइकिलिंग आ गई. यस, आ गई थी. तो ऐसे ही करते 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 हमने साइकिलिंग, स्केटिंग, लिखना, एग्जाम, wherever you are in your life today, you've reached a place where you have become this circle, right? So over this period of time, from here to here, पहले इतने से थे, अब इतने बड़े हो गए. What has happened to you? From this small dot when you started off to this larger circle, what has happened to you? We grow. Growth. Absolutely, brilliantly said. You're growing. इम्प्रूवमेंट. एक growing is the word ना, बड़े हो गए ना. तो छोटा सा सर्कल था, इतना बड़ा हो गया. पहले लिखना भी नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, सब कुछ आ गया, दायरे के अंदर आ गया, राइट? एक और स्टूपिड क्वेश्चन आप लोगों में, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू ग्रो? और उल्टा क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू डोंट वांट टू ग्रो? एंड योर डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ, वो फाइनेंशियल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, स्पिरिचुअल हो सकती है, नॉलेज हो सकती है, स्किल्स हो सकता है, व्हाटएवर. एनीबॉडी सिटिंग हियर हु डजंट वांट टू ग्रो इन हिज लाइफ? एनीबॉडी? Have you met anybody in life who doesn't want to grow? Anyone? No. जो सामने कोई भिखारी भी दिखता है ना, वो भी कहता है आज 5 रुपए भीख मिली है, कल 10 रुपए लूंगा. उसको भी ग्रोथ चाहिए, राइट? कोई इंसान नहीं मैंने आज तक देखा अपनी लाइफ में जिसको ग्रोथ नहीं चाहिए. तो एक सवाल आप लोगों से, ये सर्कल दिख रहा है, ग्रोथ इस सर्कल के बाहर है, अंदर है? इस सर्कल के अंदर है ग्रोथ क्या? सर ग्रोथ बाहर है, ग्रोइंग अंदर है मेरे ख्याल से. क्या अंदर है? सॉरी, ग्रोथ बाहर है, ग्रोइंग है अंदर. ग्रोथ बाहर नहीं, मैं कह रहा हूं आपने अगर इस सर्कल को बड़ा करना है, मतलब अभी तक छोटे 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 बड़ा करते आए हो ना, इस सर्कल को बड़ा करना है तो पेंसिल को भी तो सर्कल के बाहर निकालना पड़ेगा लगाने के लिए. Yes, इस सर्कल के अंदर Yes, sir. अगर आप खेलते रहोगे तो कभी ग्रो होगे? No. पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है. If you have to learn a new skill, if you have to do something, you have to come outside the circle, जो करंट सर्कल है. बचपन में चलना भी इसके बाहर था, तो फिर बाहर कूदे, गिरे, अंदर आ गया, फिर लिखना, फिर ये, और बहुत सारी चीजें करी. मैंने जस्ट 3 का एग्जांपल लिया आपसे. आपको बाहर निकलना पड़ेगा, राइट? अपने करंट सर्कल से, जो जिसका भी सर्कल है. जस्ट इमेजिन यू हैविंग अ करंट सर्कल ऑफ योर स्किल्स, योर नॉलेज, व्हाटएवर. ग्रो करने के लिए उससे बाहर निकलना पड़ेगा. उससे जब बाहर निकलोगे पहली बार, तो क्या होगा? सक्सेस, गिरोगे या चल पड़ोगे? पहली बार जब बाहर निकलोगे सर्कल से, गिरेंगे. आर यू श्योर? सारे गिरेंगे, कोई भी नहीं चल पाएगा? नो सर, नहीं गिरूंगा. कोई ऐसा है जो पहली बार काम करेगा तो चल, अरे यार मैंने करा और चल पड़ा? पॉसिबल है? Yes, no? Can you just come again with the question? Can you please come again with the question? Yeah, sure. Yeah. So I'm saying that growth yes, lies outside the circle, right? Yes. I have to Yes. to grow, I have to jump outside. right. When I jump outside and try something out for the first time in my life, whatever it would be, Mhm. will I fall or will I succeed? First time. I don't know. Will I fail or will I succeed? Sir, I'll Both succeed. can happen. Yes. Okay. Yeah. Okay. Let's take, so या तो I may succeed होगा या fail. failure होगा. That's what you're saying. हाँ, एक हो सकता है ना, हाँ, दोनों में से yeah, एक ही होगा. हाँ, Let's take हाँ. failure. Let's take success first. So imagine आपने पहली बार साइकिल पे चढ़े और पहली बार भी चल गई. Imagine यही हो रहा है ना कि पहली बार चढ़ा और चल पड़ी. Mhm. So ध्यान से सोच के जवाब देना मेरे को. The balance of cycling was already within your circle and you didn't know about it. You already had the balance, but you didn't know about it. That's why you first time you went and it went off. ध्यान से सुनना. You didn't know you had a balance, but first time you tried it and what happened? That means the balance was already there.
Can you see the difference? Your actual circle was outside, but you didn't know about it. आप अगर बाय द वे आप पहली बार 6th से 7th क्लास में आए थे और मैं 7th में आते ही आपका एग्जाम ले लेता 7th क्लास का, पास हो जाते हैं? नहीं, राइट? एक महीना, एक साल पढ़ाया, एक साल कॉन्सेप्ट समझाए, फिर जाके हमें समझ में आया, फिर एग्जाम लिया। पहले दिन एग्जाम ले लिया तो फेल हो रहा है। फर्स्ट डे वी वुड हैव फेल्ड। और अगर पास हो गए थे, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने उस दिन एग्जाम लिया और आप पास हो गए, इसका मतलब वो नॉलेज पहले से थी या नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं पता था। So wherever your real circle is, real circle, not talking about कि आपको नहीं पता उसको नहीं पता, पहली बार अगर आप अपने रियल सर्कल से बाहर कूदोगे तो क्या होगा? गिरेंगे, फॉल करेंगे, we will fall. 100%, because अगर आप चले तो इसका मतलब आता था पहले, हमें नहीं पता था कि मुझे आता है। So that wasn't your real circle. So first time outside will be a failure, right? So let's define failure now. आपको failure समझ में आ गया कि failure है क्या? And if you want to note this down, note this down. This is the definition of real definition of failure. अभी तक क्या बोलते थे मुझे नहीं पता, जो भी आप सोचते थे। Real definition of failure is that you're doing something which is beyond me today. आज मेरे सर्कल के बाहर है, right? Are you all with me? Yes. और अगर मैं बार बार करता रहूं, which is beyond me at this point in time, and if I keep doing it, I will. और अगर मैं बार बार गिरूंगा, उठूंगा, फिर करूंगा, फिर करूंगा, फिर करूंगा, फिर क्या हो जाएगा? What will happen? I will succeed. No, ये गेम थोड़ी सी अलग है। सही बार रिपीट कर दो। अरे सामने लिखा हुआ है, blank fill करो। Failure is doing something which is beyond me at this point in time, and if I keep doing it, I will. Learn. Nope. I will improve. हम कुछ और बात कर रहे थे, वापस चलो उस बात पे। I will grow. Perfect, Kushbu. Thank you. You will grow. Your circle will become bigger. That is the real definition of failure. तो एक काम करो, आपने एक फेलियर किया था ना, मतलब एक फेलियर दिमाग में लेके आए थे सारे लोग आंख बंद करो और उस फेलियर को वापस लेके आओ, right? And say what I'm saying to yourself. जगतार, अक्खा बंद, close your eyes and say to yourself, I jumped outside my circle. Say it in your mind. So सारे लोग बोलने लगे हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। I jumped outside my circle. I did something which was outside of me. मेरे दायरे के बाहर था और मैंने वो किया. It was outside my current circle of skills, knowledge, whatever, ability. And I jumped outside. I jumped outside my circle. मैंने अपने दायरे से बाहर निकल के कूदा. Say that to yourself and listen to yourself. How does that feel? A few of you. I jumped outside my circle. I did something which was beyond me. How does that make you feel right now? Anybody? कैसा फील हो रहा है ये बोल के कि मैंने वो किया जो मेरे दायरे के बाहर था, मैं बाहर कूदा, मैं बाहर कूदी? Proud, okay. Anybody else? Just आप mute पे हैं. Khushbu, what did you say? Happy that I did something which is beyond my Happy, proud, relaxed. believed in myself, relaxed, Yes. relieved. Okay, great. Justine, anything? Wonderful. Wonderful. Empowering. Feeling of Can you something know- great. Feeling of proud, feeling of strength. Wow, right? Faith. By the way, nothing has happened. The failure is exactly the way it is. Failure में कोई change नहीं आया. Life में same results हैं, लेकिन the feeling in the last 15 minutes has shifted from where to where. So the game is, we all want to fail. Oh, sorry, we all want to grow. The circle can grow
only when we jumped outside and make it bigger, right? So saying to yourself that I jumped outside my circle, and then you feel the experience of the jump. It feels good, it feels empowering, it feels powerful, it feels happiness. And then you feel good about it. But at that point of time, we need to do one very critical thing. Identify what is outside of us. वो क्या चीज है जो मेरे दायरे से बाहर है. So for example, अगर आप लोगों को क्रिकेट देखी होगी तो पता नहीं. So let's take an example which is common. Okay. चलो. क्रिकेट समझ में आती है सबको. मैं उसका एग्जांपल ले लेता हूँ because in India everybody understands cricket. So क्रिकेट में ना सिर्फ बल्ला घुमाने से रन नहीं बनते. हमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है, हमें मूवमेंट चाहिए होती है, हमें पैर हिलाने पड़ते हैं, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, राइट? हमें फियर को भी मैनेज करना पड़ता है. तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, सिर्फ बल्ला घुमाने से नहीं बनता है, राइट? सो आइडेंटिफाइंग व्हाट इज आउटसाइड, कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा. Was it my movement? What is my hand-eye coordination? Or is it my grip? Or is it the weight of my bat? I don't know what. It could be anything. बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. बैठ के ये देखना कि what is outside my circle. And if you're not able to identify what is outside, you'll keep repeating और समझ में नहीं आएगा. अब हो गया मेरा hand-eye coordination नहीं, और actually problem hand-eye coordination में नहीं थी, आपकी पैर की movement में. आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस करते रहो, पैर नहीं मूव करोगे तो कभी भी बैटिंग नहीं आएगी. Just taking an example of cricket. So every place where you're failing, there has to be a reason. What is the reason? मैं गाड़ी चला रहा था, गाड़ी में 10 साल से चला रहा हूँ, लेकिन एक दिन मैं गाड़ी चला रहा था जब बहुत बारिश हो रही थी और अंधेरा था और मेरी गाड़ी के टक्कर हो गई. So driving is not outside of it, but driving in that environment with that kind of a situation is outside of it. तो मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसको बार बार करके अपने दायरे के अंदर जाना पड़ेगा. बार बार गाड़ी चलाने से नहीं होने वाला सिर्फ. So identify what is outside of us. And the very critical element, okay, बहुत critical होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अब मैं बच्चों के साथ, यूथ के साथ बात कर रहा हूँ. What happens is when you fail, what do people around you say? अरे देख यार क्या कर रहा है, तू कर नहीं पा रहा है, राइट? देख फिर तूने फिर गलती कर दी, अरे छोड़ तेरे बस का नहीं, कुछ और चूज कर ले, राइट? नॉर्मली हमारे आसपास वाले लोग ये बोल रहे होते हैं, ये मैथ्स तेरे बस का नहीं, छोड़ दे यार, तू मैथ्स छोड़ दे, साइंस ले ले. साइंस नहीं हो रहा, अच्छा ठीक है कॉमर्स ले ले. क्रिकेट नहीं हो रही ना, छोड़ हॉकी खेल ले यार, क्या फर्क पड़ता है, हर एक के बस का हर एक कुछ नहीं होता. We have people around us saying that. So one thing we need to do, find at least one person in your life, one person at least, and if that could be your parent, that will be the best. अगर कोई पेरेंट मिले तो बहुत बढ़िया, नहीं तो किसी को ढूंढो, कोई मेंटर, कोई भी टीचर, कोई भी जो बोलेगा जब तार कुछ नहीं होता, चल फिर करते हैं, चल कूद जा. So create that and have one person in your life who can tell you that, because ये जो मैं अभी कराया ना आपको, ये जो फीलिंग शिफ्ट कराई है, ये फीलिंग शिफ्ट करानी आसान नहीं हो गया अकेले, बहुत साल लग जाएंगे. मेरे को ये प्रैक्टिस करते हुए 20 साल हो गए, लेकिन आज भी पहला थॉट ही आता है, अबे यार तेरे बस का नहीं है, सुजान छोड़ दे. So the point is, I have my environment in my office who says, sir, failure is wow, wow you failed. Actually यहाँ से एक पोस्टर हट गया, हमने एक पोस्टर लगाया हुआ है ऑफिस में, which says, अभी तो ऑफिस में लोग नहीं आते इसलिए हट गया. It says failure of the month. So the biggest failure of all the people in the office goes onto that board, and we celebrate it. Failure of the month chart, and my photograph and my name and my failure goes on the chart. Every month, one person gets that award. And then jump again, and again, and again. So friends, very simple. Go fail. And every time you fail, the first feeling will be pathetic. Take that on, and then just say to yourself, I jumped outside my circle. So एक छोटा सा वीडियो है, उसके बाद हम कुछ बातें कर सकते हैं. Let me just share a quick video also with you. Actually 2 वीडियो शेयर करेंगे, मेरे पास टाइम है ना थोड़ा. जैसी टाइम है मेरे पास. Jasleen, I have some time. So this is a 1-minute video. The next one is a 2-minute video. चलेगा? दिखा दिया दोनों. So the first one.
English में थोड़ी सी तेज बोल रहा है, but listen to this very Dismissed from drama school with a note that read, "Wasting her time. She's too shy to put her best foot forward." I don't know, आपको ये Lucille Ball पता नहीं होगा, लेकिन हमारे जमाने की she was the best comedian. I'm talking about 1970s. Turned down by the Decca Recording Company, who said, "We don't like their sound, and guitar music is on the way out." A failed soldier, farmer, and real estate agent. At 38 years old, he went to work for his father as a handyman. Cut from the high school basketball team, he went home, locked himself in his room, and cried. Michael Jordan का नाम सुना हुआ है? Till now, world's best basketball player. आज तक उसको गुरु मानते हैं. He was thrown out of the team and said, "तेरे बस का नहीं है, छोड़ दे." A teacher told him he was too stupid to learn anything, and he should go into a field where he might succeed by virtue of his pleasant personality. You heard of Thomas Edison? Yes. The inventor of bulb. He was thrown. He has the maximum number of patents in his name. Abhi bhi. He has the maximum number of discoveries, and he was thrown out of school because he was told that he's stupid. Fired इसका from नाम a सुना हुआ है? newspaper because he lacked imagination and had no original ideas. Walt Disney का नाम सुना हुआ है? Yes. He was sir. thrown out of the newspaper saying that you lack imagination. Like Walt Disney lacks imagination. His fiancée died. He failed in business twice. He had a nervous breakdown, and he was defeated in 8 elections. If you've never failed, you've never lived. So एक छोटी सी video. I think that will make more sense to you guys. Just give me a minute, and then maybe we can have a few questions on the whole thing. Just give me 1 second. मैं play करने दो. So आप लोगों ने failure सीखा कहाँ से? इस पे चलते हैं. Here it is. 2 minutes. बच्चे कितने गिरे होंगे? Anybody wants to take a guess? 84% of adults fell. बच्चे कितने गिरे होंगे? Anybody wants to guess? Adults से कम गिरे होंगे. कम गिरे होंगे. कम गिरे होंगे. Okay, let's see. मैं वापस करूँगा. कितने परसेंट है? दिख रहे हैं? ज्यादा गिरे हैं, मेरे को लग रहा था. Come on, Ashu, please try कर. Join the line. Very good, very good. Come on, come on, come on, come on, very good. Yes. एक बार जब मैं गिर गई तो लगा बस कौन है, अब चांस नहीं इसका. We never thought कि भी हम लोग को कि भी कुछ एक दूसरे को हेल्प कर ले, क्रॉल कर ले, कुछ एक अलग आइडियाज जो होते ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, वो नहीं थी. ये रूल्स हमने बना लिए, हमने खुद बना लिए. अच्छा, और वो एक ही कंप्लीट करने के बाद अगर गिर भी रहे हैं तो वापस जा रहे हैं उसी क्यू में कि अब हम दोबारा से करेंगे. वो हम लोग हट रहे थे कि नहीं करना. उनने ट्राई नहीं किया, अंकल आंटी ने. हम लोग ट्राई कर रहे थे. उनको डर लगा, उन्हें हार मान ली तब. जब बड़े हो जाते तब एक ही चांस मिलता है. कौन बोला? बच्चे हार मानते नहीं क्योंकि वो हार जाते ही नहीं.
Did you hear that? जब बड़े हो जाते हैं तो एक ही चांस मिलता है. कौन बोला? That is my best if you ask me. जब बड़े हो जाते हैं तब एक ही चांस मिलता है. कौन बोला? बच्चे हार मानते नहीं क्योंकि वो हार जाते ही नहीं. तो क्या बच्चों को हारना हम सिखाते हैं? सर्फ एक्सेल. सर्फ एक्सेल छोड़ो. So friends, it's very simple. Failure हमने उसका नाम दे दिया. That's the only way to grow. Only way to grow. आपने कोई भी चीज दुनिया में अपनी लाइफ में किसी ने भी आज तक बिना गिरे सीखी नहीं. एक भी चीज नहीं होगी. ढूंढ के दिखा दो. सिवाय जो चीज हमारे पैदा होने पे लगी. सांस लेना नहीं सीखना पड़ा और दिल धड़कना नहीं सीखना पड़ा. ये चीजें ऑटोमेटिक थी. अंदरूनी जितने सिस्टम थे ना वो ऑटोमेटिक बन के आए थे, इसलिए वो चीजें नहीं सीखनी पड़ी. उसके अलावा कोई एक चीज नहीं है जिसमें आपने सीखी नहीं है और बिना गिरे सीखी नहीं. पॉसिबल नहीं. So right now, growth, failure is the only way to grow. And what I'm telling you is about don't say कि यार failure नहीं होगा और मैं दोबारा आज के बाद अच्छा नहीं लगेगा, खराब नहीं लगेगा. बहुत लगेगा, सड़ मचेगी, गाली देने का मन करेगा, छोड़ने का मन करेगा. But the point is, remember this process. Close your eyes, say to yourself that I jumped. Experience of the jump. Take that experience. That will make you feel proud. That would make you want to do it again. Then sit down and analyze कि बाहर क्या है और फिर उसको जाके करो. और बीच में किसी को अपना बड़ी बना लो जो आके बोले कि कुछ नहीं होता यार, दोबारा करते हैं. You can do it. Simple, yet difficult. बहुत simple है, easy नहीं. And by the way, just change the word failure to the word growth. So whenever you fail, say to yourself, I'm growing. That will make you feel good. And by the way, if you ask me, I run a company called Parvarish. Parvarish is into training parents. मैंने छोड़ के अपनी नौकरी, I was heading customer services and operations. I was a vice president in a multinational company 10-12 years back. When I quit that and started this off, everybody, जो जानते नहीं थे, जो जानते थे, रिश्तेदार, दोस्त, कुछ भी, everybody said, don't do it. It won't happen. And I failed thousands of times. And every time I used to fail back, come back, and I say, I'm jumping outside. और अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो परवरिश मेरे ख्याल से 5, 7, 8 साल पहले बंद हो चुका होता. Right now we are training millions of parents and teachers and children across the world. The only reason we are surviving, only reason, is because wow, I failed. So go fail. Go fail. And I can do one more thing. I did a TED talk long back on this one. I'm just quickly sharing a link to that on the chat. If you want, use it, see it as often as possible. This will really bring it back to you. तो मैं उसका आपको लिंक इस पे भेज देता हूँ, नहीं तो आप शेयर कर लेना कभी जाके कहीं पे भी लगता है. Just go and look for it on the YouTube. You'll find it. Here it is. So all the best and thanks for being here. And I hope जो फेलियर अभी उठाया था उसको दोबारा करने का मन कर रहा है, अपने सर्कल में लाना है. Just go do it. You can. There was somebody raising a hand. You want to ask a question or? Okay. Sir. Great. हाँ, Jita. सर मेरे ख्याल से ना सर हर बारी बंदा फेल नहीं हो सकता, मतलब बंदा बगैर फेलियर के भी सक्सेस कर सकता है. हाँ सर. एक पीस बता दे Jita. One. Give me one thing. एक चीज बताओ. नहीं सर मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव अलग है इस चीज में. मतलब आपका पर्सपेक्टिव अलग होगा, लेकिन सर बिना गिरे हम आज तक एक चीज नहीं. अपनी लाइफ में देख लो, किसी की भी लाइफ में जाके देखो, एक भी चीज नहीं होगी. आपने पेंसिल नहीं उठाना सीखा एक बार में, आपने ग्लास नहीं उठाना सीखा एक बार में, आप बोलने में हमें 2 साल लग गए थे, लिखना सीखने में 3 साल लग गए थे, चलने में महीनों लग गए, साइकिल चलाने में महीनों लग गए थे, गाड़ियां सीखने में महीने लग गए.
whatever you do, कोई भी लैंग्वेज सीखने में सालों लग गए थे। हम तुतला के बोलते थे, हमें बोलना भी नहीं आ रहा। पर्सपेक्टिव वाला हो सकता है शॉर्ट, बट ढूंढना अपनी दुनिया में आराम से बैठ के। अभी जवाब मत देना। My details are here to contact. Everything is out here. कोई एक चीज ढूंढो देता है जहां पे हमने बिना गिरे सीखे, बिना गलती करे सीखे, बिना फेलियर के सीखे। एक भी ढूंढो। अभी सोचो, सब सोचो, कुछ ऐसा है। सर मतलब वैसे कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है। अगर कोई बंदा नया नया बिजनेस शुरू करता है तो उसमें कई बंदे फेलियर को साइड रख के सक्सेस ले लेते हैं। फेलियर तो होना है ना। नहीं सर, पहली बार नहीं होता। एक काम करो, जिसने बिजनेस किया उससे पूछो कितने दिन लगे थे सक्सेसफुल बनाने में, और कितनी बार घर पे आके रोया था कि यार ये तो नहीं हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में ले लो, सेलिंग में ले लो, किसी भी चीज में ले लो। Without your getting trained for it, you wouldn't have made it. Ask those people जिन्होंने इंडस्ट्री भी बनाई है। किसी भी इंडस्ट्री में पहले साल मुनाफा हो जाएगा, देखा है कोई? तो फिर लॉसेस हुए थे ना, पॉसिबल ही नहीं है। क्या कुछ हो सर जैसे लाइफ में ऐसी कितनी चीज़ें होती हैं कि हमारे अंदर जैसे एजुकेशन सिस्टम है हमारा, और हम एक बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो हमें लगता है अगर हम एक बार फेल हो गए तो यार अब आगे क्या करेंगे, लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ये शो होगा। तो वो भी एक टाइप का हमारे लिए फेलियर है। तो वैसे फेलियर से हम कैसे डील करें? सर पहली बार किसने बोला? नहीं, अरे बोलते हैं, लेकिन रियलिटी में देखो ना। आपने एडिसन का नाम सुना होगा, और हम सब बोलते हैं उसने बल्ब इन्वेंट किया था। Do you know how many times did he fail? Anybody? 1,000 times. Before he invented the bulb. It was, some people say 10,000 times, some people say 1,000 times, whatever it is. और फिर ना जब ये इन्वेंट किया था ना, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसकी, जब बन गया था, तो वन ऑफ द जर्नलिस्ट आस्क्ड हिम कि एडिसन, यू फेल्ड 999 times या 9,999 times, whatever it was, before you invented the bulb. He said, I know 9,999 ways of how not to make a bulb. What do you know? और अगर उसने बोल दिया होता ना 9,800 पे भी कि यार अब नहीं हो रहा, यार छोड़ दो, तो शायद हम अभी शायद अंधेरे में बैठे होते। किसी और ने तो इन्वेंट कर ही लिया होता, ऐसा नहीं, तो बहुत साल लग जाता है। So what he was jumping required 10,000 failures. So the bigger the jump, the bigger the failure. The bigger the failure, the bigger the growth. And by the way, कहीं और चले गए थे वो। खुशबू कह रही थी कि यार बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाएंगे। कितने लोगों को जानते हो जो बोर्ड एग्जाम में फेल हो गए और लाइफ बहुत अच्छी कर रहे हैं? खुशबू, बहुत लोगों को जरा दिख के आना। करोड़ों हैं, हम नहीं ना सर, करोड़ों हैं। बाय द वे, मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मैं इंजीनियर हूँ, ओके, मेटलर्जिकल इंजीनियर। काम क्या कर रहा हूँ मैं? क्या रिलेशनशिप है? मैंने वो बोर्ड एग्जाम पास कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली, बहुत बढ़िया मार्क्स भी लिया। क्या रिलेशनशिप है उसमें और आज में? जीरो। कुछ नहीं है सर, मार्क्स मैटर नहीं करते, कभी नहीं करते। कोई नहीं है। बाय द वे, आज से बोलना चलो, फेलियर मैटर नहीं करता। अगर फेलियर नहीं हुआ ना, तो यू नॉट लिव्ड योर लाइफ। अगर यहाँ पे कोई बैठा है जिसने साइकिल नहीं चलाई, जिसको नहीं चलानी आती, ध्यान रखना वो फेलियर से डर गया और उसने नहीं सीखी। या उसको वो इंसान नहीं मिला घर पे जिसने बोला कि तू गिर, तू मर, तू जो भी कर, सीख के तो आएगी, और उसने जबरदस्ती धक्का मार के फेंक दिया। जिसके घर पे वो इंसान नहीं था, या फिर उनको लगा नहीं यार बड़ी जोर से चोट लगी, चल छोड़ पड़े, क्या फर्क पड़ता है, साइकिल नहीं सीखता, वो जिंदगी भर भी नहीं सीख पाया। बाय द वे, गाड़ियों के साथ मिलता है। पीपल हु डिडंट आर नॉट रेडी टू फेल, जिसको डर है गया मैं गाड़ी चलाऊंगा, ठोक दूंगा, वो नहीं चला पाएगा गाड़ी। So somebody had a question. What's the question? How can we generate a lead so that we can help generate each a other? lead मतलब can you ask me, somebody can just मतलब मेरे को थोड़ा सा explain करते हो कि generate a lead मतलब? The question was asked for Z soft point. Z soft point पर नहीं पूछा, पीछे कोई बैठा होगा। Can you please speak?
अपना नाम पहले बता दो यार. That's a point can be not a person, right? Yeah, hello. हाँ Am जी. I audible to you guys? Yeah, loud and clear. Yeah. Founder and State SoftPoint, a partner company of Microsoft, Google, AWS, Facebook, WhatsApp. We are the leading IT services provider across the world and largest SMEs promoter in India. So I would just want to know that how we can help each other to generate leads and grow each other business by our services, and we can, we can take other services to grow our business, and we can offer our services to raise their business. So how we can do in Punjabi Chamber of Commerce? Actually, Sir, ये there is a सवाल actually सर there is a ये सब Yeah, go सर एक ahead. छोटा सा सर एक सेकंड ये सवाल ना आप पूछ तो ठीक रहे हो लेकिन गलत इंसान से पूछ रहे हो. मैं भी फेलियर की बात कर रहा हूँ. पंजाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सवाल जीनिया से पूछ लेना, जसलीन से पूछ लेना, क्योंकि ये सवाल अभी मैं सिर्फ फेलियर पे जा रहा हूँ. आपका सवाल थोड़ा अलग है. सवाल वैलिड है लेकिन सर आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, बहुत कट रही है. वी कांट हियर यू क्लियरली. सो आई गॉट योर क्वेश्चन. जो मुझे समझ में आया कि हम एक दूसरे को बिजनेस में कैसे हेल्प कर सकते हैं पीसीसी के अंदर. आई गॉट योर क्वेश्चन, बट मैं कह रहा हूँ वो क्वेश्चन मेरे से गलत. I'm saying that question is to a wrong person. मैं अभी सिर्फ फेलियर की बात कर रहा हूँ. पीसीसी की बात अलग से हो जाएगी. Sir, मेरा question. Yeah, Jagtar. Yeah, sure. Sir, how to respond to a time when you have to deal with major failure? Exactly the same way. Yes, sir. There is no difference between exactly the same way. जो मैंने आपको रूट अभी दिखाया था वो ही है और कुछ नहीं. First, पहली बार दिमाग में आएगा क्या बकवास है, whatever सब आ जाएगा. Just give yourself 2 minutes. Sit down with yourself, close your eyes and say to yourself, I jumped outside. वो जो मैंने स्टेप्स लिख के दिए थे आपको ना वही करने हैं. मेजर, स्मॉल, बिग कोई फर्क नहीं पड़ता. Every failure is a growth. Every failure is a next step to growth, not to success. Sir, then what is resilience? Resilience is the ability to get up. अभी क्या हो रहा है? अभी आप गिव अप कर देते हो ये सोच के बकवास है, नहीं हो रहा, मेरे बस का नहीं है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेटिंग है, जो भी है. किसी और को एक्सटर्नलाइज कर दिया, दूसरों को बोल दिया तेरी गलती है. So you've given up, right? Resilience is the ability to get up every time you fail. So when you fail, this process will give you that whole feeling of pride, happiness, enjoyment. Wow, I did it. You'll get more power, you'll get empowered, and you will get up and do it again. Period. Your ability to stand up in front of anything is resilience. Not giving up in one life. बहुत इसके nuances हैं. So आज हमने एक छोटा सा nuance पढ़ा था. Lot many nuances of resilience. How do you manage your emotions? How do you manage your thoughts? But वो इतने से सेशन में दोनों खत्म नहीं हो सकते. ये वाला सेशन भी एक्चुअली आई डिड वेरी क्विकली विद यू. इट नॉर्मली टेक्स अबाउट 3 hours. So great, yeah. Thanks for being here. Thanks for your time. My only small request is कि अगर सेशन के बाद बंद करने से पहले take a minute, each one of you, and जो आपने भी फेलियर सोचा था उस फेलियर के नेक्स्ट स्टेप्स अभी लिखो. एंड नेक्स्ट स्टेप में आप सोच सकते हो कि यार व्हाट इज आउटसाइड ऑफ मी. प्राइड वाली फीलिंग और एम्पावरमेंट तो आ गया था पूछने के बाद. व्हाट इज आउटसाइड ऑफ मी? जस्ट टेक अ मिनट एंड राइट. यार उसमें बाहर क्या था? मेरी नॉलेज नहीं थी, स्किल नहीं था, एप्टीट्यूड नहीं था, मेरा गुस्सा चल गया था, क्या हो गया था? व्हाट वाज आउटसाइड ऑफ मी? वो लिख लो. एंड ऑल्सो राइट हु विल यू क्रिएट एज अ सपोर्ट स्ट्रक्चर. वो एक इंसान कौन होगा जो उस टाइम पे आपका हाथ पकड़ सकता है, बोल सकता है कोई फर्क नहीं पड़ता, चल दोबारा करता है. Anybody, that can be anyone. And if you can convince your parents to be that, it will be a miracle. Once they say you can, if you want to take an example, let me just give you one more quick tip. ये जो फेलियर हो रहा है ना, जो एरिया है फेलियर का, एक तो
10 सेकंड के लिए आंखें दोबारा बंद करो। ये मेरा फेवरेट आंसर है, मैं हर बार थोड़ी देर बाद आंखें बंद कराता रहता हूँ। आंख बंद करो और इमेजिन करो कि तुम्हारे मम्मी पापा अभी कमरे में आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, तुम्हारे कंधे पे हाथ रख रहे हैं। इमेजिन द हैंड ऑफ योर फादर और योर मदर ऑन योर शोल्डर, और वो बोलते हैं प्रियंका, यू कैन डू इट, मैं तेरे साथ हूँ, आई एम विद यू, यू कैन डू इट। Just experience their hand and they're saying to you, you can do it, I am with you. कर सकता है, मैं तेरे नाल हूँ। How does it feel right now? क्या लग रहा है? What's the experience? जोश आ गया। चकले पट्टे हैं जितना? इससे रीजनरेशन हो गया अंदर उस चीज की। उड़ के आ जाओगे तो गो टॉक टू योर पेरेंट्स एंड से यार जब मैं गिरूंगा ना बस यहाँ हाथ रख देना, बोलना कि तू कर सकता है, बस तू और कुछ मत बोलना, बाकी मैं कर लाना। Okay guys, all the best, have fun, enjoy yourself and keep in touch. This is in short my coordinates. If you want to keep in touch, sure. That's my number, that's the channel. Thank you, Shyamji. Thank you very much. Thank you, sir. Really nice. Thank you. Thank you, sir. Close करें, anything else? Junior, Rajshri, Jasleen, you want to say something to close or let's close? Thank you so much, sir, for your wonderful session. We had a great time today. I hope that the audience had enjoyed it a lot and also get a lot of exciting knowledge. So with this, I would like to take the opportunity to thank Mr. Shashant Kalra for delivering such a magnificent session and the whole PCC team for their constant support. Last but not the least, thanks to all participants and the viewers who made this workshop highly interactive and exciting. Join us by registering on www.punjabichamber.com to have such stunning experience frequently. Thank you so much. Everyone, I'm closing the meeting for everyone. Thank you, Sushant sir. Thank you. Bye-bye.